So students, today we are going to see about United Nations. Now, let me give you some brief idea regarding United Nations. Then we will start your textbooks. I will start your textbook explanation. So, United Nations is an international, intergovernmental organization that aims to maintain international peace and security, develop friendly relations among nations, achieve international cooperation, and be center for harmonizing the actions of nations. It is the largest, most familiar, most internationally represented, and most powerful intergovernment organization in the world. UN is headquartered on international territory in New York City. ये हम लोगों ने कल भी देखा था. With its other main offices in Geneva, Nairobi, Vienna, and The Hague. ठीक है. Then when was it established? उसके headquarters जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है. फिर उसमें कितने organs होते हैं, वो कब यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ था. तो यूनाइटेड चार्टर नेशन जो था, चार्टर जो है वो साइन हुआ था 26 जनवरी 1945 को. और चार्टर जो था मतलब लिस्ट ऑफ जो चार्टर, उसका मतलब होता है जो पॉइंट्स हम लोगों को फॉलो करने होते हैं. वो जब है वो फॉलो में कब आया, ठीक है, या फोर्स में कब आया, तो वो आया था 24 अक्टूबर 1945, which is around 74 years ago. Then, United Nations was established after World War II with the aim of preventing future wars succeeding the ineffective League of Nations. तो ineffective League of Nations जैसे बना था after First World War, ये वैसे ही बना था लेकिन कुछ ज्यादा ही effectiveness थी उसमें. On April 25, 1945, 50 governments met, 50 nations met in San Francisco for a conference and started drafting the United Nations Charter, which was adopted on 25 June 1945 and took effect on 24th October 1945 when the UN begins operation. Then, pursuant to the charters, the organization's objectives include maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development, and upholding international law. At its founding, मतलब जब उसका बना था, ठीक है, and UN had 51 member states, that is nations. This number grew to 193. अभी presently है 193 in 2011, ऐसा पता था, ठीक है, representing almost all the world's sovereign states. The organization's mission is to preserve world peace was complicated in the early decades by Cold War between US and USSR. USSR मतलब आपका रशिया and their respective allies. Its missions have consisted primarily of unarmed military observers and lightly armed troops with primarily monitoring, reporting, and confidence building roles. So this is your what we say general summary of your United Nations. So America's efforts to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. American President Roosevelt made four important announcements regarding freedom while giving his message to American Congress with the intention of human freedom, peace and security. वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 9th चैप्टर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था वैसा. तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहां से है, फ्रॉम दिस मेजर पॉइंट्स. देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर. नेक्स्ट, later President Roosevelt and British Prime Minister Churchill prepared an 8-point agreement while they were on ship in Atlantic Ocean, which later came to be known as Atlantic Agreement. तो आप लोगों को definition पूछ सकते हैं कि what do you mean by Atlantic Agreement? तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से start करना पड़ता है. President Roosevelt and British Prime Minister Churchill prepared an 8-point agreement while they were on a ship in Atlantic Ocean, which later came to known as Atlantic Agreement. The agreement includes matters like maintaining freedom and sovereignty of every nation,
peace, security, social and economic welfare and disarmament. Disarmament मतलब किसी के भी nations के पास जब कुछ भी problem होती हो तो arms लेके खड़े नहीं हो जाना है, ठीक है, शांति से negotiation से बातें करनी है, that is disarmament. Then the foreign ministers of Britain, America, Russia and China met in Moscow for world peace, which came to be known as Moscow डिक्लेरेशन, ठीक है। तो उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन तो थे ही और फिर उसमें और ज्वाइन हो गए रशियंस एंड चाइना, मॉस्को में मिले and Moscow Declaration कर दिया. In November 1943, three superpowers held a conference in Tehran. The representative of 50 nations prepared the agreement for United Nations at Washington, जैसे मैंने बताया September 1944. On October 24, 1945, the 51 member nations declared the establishment of United Nations. India is also a part of it. ठीक है, सिंस देन 24 अक्टूबर, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैंने जैसे बताया प्रेजेंटली 193 नेशंस आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। Now we will study about the organs of United Nations. Again, before reading from your textbook, I will give you generalized idea about six major organs of United Nations. So the UN has six principal organs: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, जिसको हम लोग इकोसॉक बोलते हैं, ECO, यहाँ से ECO and SOC, ECOSIC. Then the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and last is Secretariat. ठीक है, the UN system includes a multitude of specialized agencies such as World Bank Group. मैं explain कर रहा हूँ, हाँ, फिर मैं वन बाय वन हर एक टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूंगा. वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, देन यूनेस्को, यूनिसेफ. एडिशनली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज NGO may be granted consultative status with ECOSOC and other agencies to participate in UN's work. The UN Chief Administrative Officer is Secretary General, currently Portuguese politician and diplomat Antonio Guterres, who began his 5-year term on 1 January 2017. The organization is financed by assessed and voluntary contribution from its member states. तो उनको फाइनेंस पैसे कहाँ से मिलते हैं? ये यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने हिसाब से पेमेंट करते हैं, अपना वॉलेंटरी पैसा देते हैं. यूनाइटेड नेशन इज ऑफिसर एंड इट्स एजेंसी हैव won many Nobel Peace Prizes. Through other evaluations of its effectiveness have been mixed. Some commentators believe the organization to be an important force for peace and human development, while others have called it ineffective, biased or corrupt. वो लोगों की अपनी अपनी वो है. Now, organs of United Nations. The structure adopted by United Nations to achieve its aim includes 6 organs, जैसे मैंने बताया, General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, जिसको हम लोग ECOSOC बोलते हैं, Trusteeship Council, International Court of Justice, and last is Secretariat. ठीक है. Now, International Court of Justice is situated in Hague बोलते हैं इसको, which is in Netherlands. बाकी के सब जो है, all other councils are situated in New York, America. Now, activities of organs of United Nations. फर्स्ट जनरल असेंबली. मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जनरल असेंबली एंड फिर आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ूंगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरल असेंबली? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसको ऐसा भी बोलते हैं UNGA. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज वन ऑफ द 6 principal organs of United Nations, serving as the main deliberative, policy making and representative organ of UN. Its powers, compositions, functions and procedures are in the chapter number 4 of United Nations Charter. Then
This General Assembly is responsible for UN budget, appointing the non-permanent members to Security Council, and appointing the Secretary General of United Nations, receiving reports from one parts of UN system and making recommendations through resolutions. ठीक है, फिर उसका दूसरा मेन काम क्या है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं बता रहा हूँ. द फर्स्ट सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली वाज कन्वेन्ड ऑन 10 जनवरी 1946 in the Methodist Central Hall in London and included representatives of 51 nations. The next few annual sessions were held in different cities. The second session in New York and the third in Paris. It moved to permanent headquarters of UN. तो जनरल असेंबली परमानेंट जो है परमानेंट मेंबर बन गया. In New York City, at the start of its 7th regular annual session, that is on 14th October 1952. In December 1988, in order to hear Yasser Arafat, the General Assembly organized its 29th session in Palace of Nations in Geneva, Switzerland. ठीक है. Now, what are the agenda? ठीक है, उसका एजेंडा क्या है? तो जनरल असेंबली जो है, the agenda for each session is planned up to 7 months in advance and begins with the release of primarily list of items to be included in provisional agenda. Then this is refined into a provisional agenda 60 days before the opening of the session. After the session begins, the final agenda is adopted in plenary meeting, which allocates the work to various main committees who later submit reports back to the assembly for adoption by consensus और by voting. जैसे अपने यहाँ पे वोट होता है वैसे ही वहां पे भी वोट होता है. ठीक है. नेक्स्ट उसके सेशन हम लोगों ने देख लिए. ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज जनरल असेंबली, जैसे मैंने बताया. ठीक है. देन it includes the representatives of all member nations. Every nation can send maximum 5 representatives to this, but during election, only one vote of each country is counted. Then next, क्या क्या include होता है? It can discuss, advise, suggest or recommended on any matter related to international relations. Then it accepts the budget presented by Secretary General every year and allocates the expenses. Then it attempts to find solution to the economic problems of nations. जो देश गरीब है या उनको फाइनेंशियली हेल्प करना है तो ये जनरल असेंबली सॉल्यूशन देता है. ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल मैटर्स. एंड लास्ट, decisions are taken by 2/3 majority, that is nothing but your 67% in general matters. ठीक है. तो that is your general assembly. Now we will start your security council. Again, before starting security council, I will explain you what do you mean by security council. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसको ऐसा भी बोलते हैं यूएनएससी, इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर चार्ज्ड विद ensuring international peace and security, recommending the admission of new UN members to General Assembly and approving any changes to UN Charter. Its powers include establishing peacekeeping operations, enacting international sanctions, and authorizing military action. The UNSC is only UN body with the authority to issue binding resolutions on member states. फिर उसमें कितनी मेंबरशिप है, कितने कितने परमानेंट मेंबर्स है? तो परमानेंट मेंबर्स है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशन. और वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो कौन से हैं? बेल्जियम, डोमिनियन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइगर, देन सेंट विंसेंट एंड द ग्रेडिनेस, साउथ अफ्रीका, टूनेशिया, वियतनाम. ये सब जो है वो क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर.
नाउ इसकी हिस्ट्री जो है कुछ इस तरह से है. इन द सेंचुरी प्रायर टू यूनाइटेड नेशंस creation, several international treaty organization and conference had been formed to regulate conflicts between the nations, such as International Committee of Red Cross and Hague Conventions of 1899 and 1907. Following the catastrophic loss of life World War One, the Paris Peace Conference established the League of Nations to maintain harmony between the nations. लेकिन वो तो फेल हो गई, इसीलिए the league lacked representation for colonial peoples. Then what happens? तो after 1945, okay, ये Security Council जो है that came into force. Now, this is the most important organ. Now, I'm explaining from your textbook. This is the most important organ of your United Nations. There are 5 permanent members, that is America, Britain, France, Russia, and China. Other 10 countries, मैंने बताया, are non-permanent members. They are elected for the 2 years, for the term of 2 years by General Assembly. This council enjoys tremendous power in order to maintain international peace and security. तो यहाँ पे देखो आपको परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है. अमेरिका के 82%, ब्रिटेन 32, 18%, फ्रांस, चाइना इज गिवन 4% एंड रशिया 122% इन द सेंस सीट्स, ठीक है. Now, it solves the problems and disputes of nation peacefully through negotiations and mediations. When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take decision on that. मतलब कुछ पांच के लिए पांचों में कुछ डिस्कशन होता है और अगर एक भी मना कर दे तो वो लॉ पास नहीं होता है और ऐसे वोट को हम लोग वीटो पावर बोलते हैं. This power of 5 permanent members is called veto, or you can say right to deny. Russia has used this veto power maximum number of times. ठीक है, रशिया ने जो है वो maximum number of times veto power यूज किया है. Now moving forward towards ECOSOC, that is Economic and Social Council. So ECOSOC जो है is one of the 6 organs of United Nations responsible for coordinating the economic and social fields of the organization, specifically in regards to the 15 specialized agencies, the 8 functional commissions and 5 regional commissions under its jurisdiction. अब ये बना कब था? तो इकोसॉक was formation, उसका फॉर्मेशन था 1945. उसकी टाइप है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में. उसका जो प्रेसिडेंट है हाल का वो है मोना जुल. ठीक है. नाउ let us start your Economic and Social Council, also called ECOSOC. The General Assembly appoints of its retiring members for 3 years. This council tries to raise standard of living of nations. मतलब कहीं से ना कहीं से fund organize करते हैं of world without any bias of religion. Bias means what we say, partiality of religion, caste, region. The council and its sub council work all over the world. जैसे कि फर्स्ट आप सबको पता है WHO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. जो अभी बहुत ही कोविड-19 की वजह से मार्केट में उनका नाम बहुत ही आ रहा है अगर आप लोग न्यूज वगैरह अच्छे से पढ़ते हो तो. देन कम्स IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. ये आप लोगों को हर एक के है ना क्या याद रखने पड़ेंगे फुल फॉर्म, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं. वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज FAO, उसका सिंबल भी देख लो. फूड एंड ये वाला जो है उसका सिंबल है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्रीज एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल. देन ILO सिंबल देख लो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू द लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड. देन कम्स यूनिसेफ. यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. Nowadays it is known as United Nations International Children's Fund. ठीक है. Undertake children's welfare
activities to improve the health of children and of the world by providing nutritional and food and education. And next is UNESCO. UNESCO is nothing but United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Works to improve the cooperation between the nations by removing illiteracy, raising the standard living of people through education, providing justice, education, and science and cultural resources. Besides this, there are sub-councils and regional councils which undertake various organizations and activities. नेक्स्ट इज योर ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल मतलब क्या होता है? अब ये भी वन ऑफ द पार्ट ही है, ठीक है। किसका पार्ट है? ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस विच एस्टैब्लिश टू हेल्प एंश्योर ट्रस्ट टेरिटरीज वेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज in the best interest of their inhabitants and international peace and security. The trust treaties, most of them former mandates the League of Nations and territories taken from nations defeated at the end of World War II, have now allowed attained self-government or independence either as separate nations or by joining neighboring independent countries. मतलब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो बॉर्डर रिलेटेड काम करता है. So there are 5 permanent members nations in this council. The representatives selected by the General Assemblies are included over here. It oversees the matters pertaining to the nations that have not acquired independence and are under some previous mandate. Mandate का मतलब उधारी पे जी रहे हैं वैसे. Also nations defeated in the Second World War as its social, economic and political justice. Yeah, political development. Then next is your इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक लौता ऐसा है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड में, ठीक है। सो इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन, इसका मेन काम क्या है? इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड गिव्स एडवाइजरी opinions on international legal issues referred to it by UN. Its opinions and rulings serves as a source of international law. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज मोस्ट सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे नेशनल ओवरऑल वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए ये जाना जाता है, मोस्ट पावरफुल। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था पता है आप लोगों को? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1945 में। और जज टर्म लेंथ क्या होती है? वहां के जज जो है वो कितने साल तक रहते हैं? 9 इयर्स के लिए। और वहां के पोजीशंस कितनी है? कितने जजेस के लिए पोजीशंस है? 15 जजेस के लिए, ठीक है। हाल में उसका जो प्रेसिडेंट था, मतलब करंटली, वो कौन है? अब्दुल काफी यूसुफ, ठीक है। और करंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है जुई हेंटविन, ठीक है। ये एक एडिशनल नॉलेज है आप लोगों के लिए। So its headquarters is in the city of Hague, Netherlands. There are 15 judges in it who are appointed for 9 years. It solves dispute between nations, gives verdict on international disputes presented before it, and gives legal advice. And the last is your secretariat. What do you mean by secretariat? The secretariat is nothing but United Nations executive arm बोलते हैं. The secretariat has an important role in setting the agenda for deliberative and decision-making bodies of UN. That is the General Assembly, Economic and Social Council and Security Council. The implementation of decision of this body. The Secretary General, who is appointed by General Assembly, is the head of Secretariat. ये खास याद रखना, ठीक है। उसका फॉर्मेशन हुआ 1945 में। अभी जो हेड है वो है एंटेनो जेरेटस, ठीक है। So the office of Secretary General of United Nations is called Secretariat. The General Assembly appoints the Secretary General for 5 years. Secretaries, administrators, assistants, translators, and experts are also appointed by the Secretary General. The Secretariat is situated in New York. The United Nations has constantly been making efforts to establish world peace, world unity, and to achieve the dream of universal brotherhood. So that's the end of our chapter number 3.
and we will continue chapter number 4 very soon. Thank you very much, students.